नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारे पिछले वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के यूनिट 10 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके फर्स्ट टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस और इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज. Why it is known as degenerative joint disease, in next slide we'll get to know. Then objectives. First, introduction of osteoarthritis. Slide number 8 में मिलेंगे आप लोग को. Next, define osteoarthritis in slide number 11. Classify osteoarthritis in slide number 15, causes of osteoarthritis in slide number 17. Next, pathophysiology of osteoarthritis in slide number 20. Explain the clinical manifestation of osteoarthritis in slide number 23. Diagnosis of osteoarthritis in slide number 27. Explain the medical management of osteoarthritis in slide number 30. Explain the surgical management of osteoarthritis in slide number 32. Nursing management of osteoarthritis in slide number 36. Prevention of osteoarthritis in slide number 38. Next condition will be rheumatoid arthritis. Introduction will be in slide number 52. Definition in slide number 54, types in 58 number slide, causes of rheumatoid arthritis you will get it in 60 slide number, pathophysiology of rheumatoid arthritis in 68 number slide, explain the clinical manifestation of rheumatoid arthritis in 89 number slide, diagnosis of rheumatoid arthritis in 90 number slide, medical management of rheumatoid arthritis in 93, surgical management in 95 and prevention will be in 100 number slide. Let's see the introduction of osteoarthritis. Osteoarthritis is also known as degenerative joint disease because in osteoarthritis there is breakdown and eventual loss of the cartilage of one or more joints. Osteoarthritis occurs more frequently as we age. Before age 45 years it occur in male. After 55 years it occur more frequently in female. Osteoarthritis most often occur at the end of the fingers, thumbs, neck, lower back, knees and hips. First of all, you need to know the word osteoarthritis is composed of three main words. First, osteo, bone, arthon means joints, itis means inflammation. So basically it is the inflammatory condition of bone and joint articular cartilage. Now what is articular cartilage? Articular cartilage is nothing but connective tissue that found end portion of the bone which maintain the flexibility, lubrication, elasticity of bones and joints. With the help of articular cartilage we can move our limbs without any pain. Osteoarthritis also known as degenerative joint disease. Why it is called degenerative joint disease? Because degeneration means whenever we are getting old our some systems or all of systems start deteriorating and organs started loses their function. This is known as degenerative. Then osteoarthritis also same thing. This is degenerative condition.
where bone and joint articular cartilage start degrading, which leads to pain, joint stiffness, narrow joint space, restricted movement. This disease mainly develop in the fingers, thumb, neck, lower back, knees and hips. All the stress bearing joints are in risk of getting this disease. That's all about the introduction of osteoarthritis. Now let's see the picture. This is the image of one healthy joints. Two bone comes together, which is known as joint, and this joint is nicely covered by synovial membrane. You can see in the picture nicely. Cartilage cover the bone at the ends of the joint, and a nice joint space also you can see. दोनों बोन के बीच में आपको एक जॉइंट स्पेस दिखाई देंगे जिसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है, एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज विच इज कनेक्टिव टिश्यू बोन्स के एंड को कवर करते हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल क्योंकि बोन्स को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. नाउ सबकॉन्ड्रल बोन. सबकॉन्ड्रल मीन्स जस्ट बिलो द कार्टिलेज एरिया. Then this is the one image of knee osteoarthritic condition. Left hand side you can see this is the image of healthy joints, and in right hand side you can also look the degradation already developed in articular cartilage. Articular cartilage start breaking down, and after that in severe or chronic stage articular cartilage is completely diminished and two bones come together and it develop joint fusion. This is very painful condition for the patient, जिसमें बोन्स में फ्रिक्शन होंगे, रबिंग होंगे, बोन में ओवरलैपिंग होने की वजह से ग्रेटिंग, they will grate each other, they will rub each other, and this is really painful. Now definition of osteoarthritis. It is a group of mechanical abnormality involving degradation including cartilage and subchondral, characterized by pain, tenderness, stiffness and effusion. As you know that this is the inflammatory condition, when this is the abnormal condition which involve the degradation of the cartilage and subchondral area. Subchondral means just below the cartilage area, and characterized by pain, tenderness, stiffness, effusion, redness. And in this picture you can see the healthy joint and joint affected by the osteoarthritis. Cartilage start thinning of the cartilage or thin cartilage breakdown already शुरू हो चुका है. And in osteoarthritis condition में आपको small bone growth देखने मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं bone spur and osteophytes. ऑस्टियोफाइट्स इसीलिए आपको बोन की एंड पोर्शन में देखने मिलेंगे क्योंकि हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, एंड वो डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से ऑस्टियोफाइट्स का डेवलपमेंट होते हैं. नेक्स्ट यू विल आल्सो लुक द small cartilage fragment in between two bone or in joint space. Now based on the previous slide I prepared one practice question. Let's see this question. Which part of a joint does osteoarthritis usually affect? Option includes bone, cartilage, tendon, all of the above. So as you know that cartilage is mostly affected in osteoarthritis condition. Please remember this, articular cartilage is affected here. Now classification of osteoarthritis. There are mainly two classification of osteoarthritis. First is primary osteoarthritis and secondary osteoarthritis, second one. So we'll firstly discuss about the primary osteoarthritis. Primary osteoarthritis is not linked with any of the condition or any of the disease condition. It is basically due to aging and wear and tear mechanism. So what is happening here in with aging? With age, after 40 years, the protein content of cartilage reduce and cartilage start deteriorating. This is one reason with aging. Second is wear and tear mechanism. Wear and tear mechanism means if we use our joint
excessively in a wrongly manner, then it will give pressure on cartilage and cartilage will damage. Wrongly manner means अगर आप लोग लॉन्ग टाइम से फ्लोर में सिटिंग पोजीशन में बैठे हो या एबनॉर्मल पोस्चर्स में बैठे हो तो वो क्या करते हैं, आपकी कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, आपकी कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं. तो इन प्राइमरी आर्थराइटिस देयर आर मेनली टू रीजंस. फर्स्ट रीजन इज it's due to aging. Second one is wear and tear mechanism. Now we'll move to secondary osteoarthritis. Secondary osteoarthritis is always linked with bone injuries, sports injuries, inflammation, fractures, bone necrosis. तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा कंडीशंस के साथ लिंक होते हैं, बट प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशंस के साथ लिंक नहीं होते हैं. Let's see the causes of osteoarthritis. First cause is increased age. तो increased age होने से क्या होगा, aged होने से हमारे जो bones होते हैं इसकी मैट्रिक्स में एक सेल मिलते हैं जिसका नाम है chondrocyte cell. This chondrocyte cell is very very important because chondrocyte cell एक प्रोटीन का सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है प्रोटियोग्लाइकेन एंड कोलाजन का भी सिक्रेट करते हैं. तो along with the age, the chondrocyte cell reduce in number and proteoglycan protein not forming in this age, which leads to breakdown of the cartilage. आपको समझ आया होगा कि इंक्रीज एज में chondrocyte सेल का प्रोडक्शन नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से कोलाजन एंड प्रोटीन दोनों ही कम हो जाते हैं, दोनों फॉर्म नहीं हो पाते हैं एंड डायरेक्टली इट्स लिंक टू ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज. नाउ ओबेसिटी कैसे अफेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेस बियरिंग जॉइंट गेट प्रेशराइज, दिस लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द कार्टिलेज. ओबेसिटी की वजह से जो स्ट्रेस बियरिंग जॉइंट्स है इसमें प्रेशर्स आते हैं एंड वो कार्टिलेज को वीक कर देते हैं. प्रीवियस जॉइंट इन डैमेजेस, दिस इज डायरेक्टली लिंक विद सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस. एनाटॉमिक डिफॉर्मिटी, एनी एनाटॉमिकल कंडीशंस जैसे कि बोन में कोई एबनॉर्मलिटीज हो, जॉइंट्स में कोई एबनॉर्मलिटीज हो, दैट लीड्स टू ऑस्टियोआर्थराइटिस. जेनेटिक susceptibility, stress and repetitive use of the joints, these are the causes of osteoarthritis. Next practice question, second practice question is, which of this makes it more likely to get osteoarthritis? Young age, excess body weight, too little body weight and back pain. As you already said that obesity is one of the causes of osteoarthritis because this obesity or fat give pressure on the stress bearing joint and that leads to weakening of the cartilage. Now pathophysiology. Due to etiological factor, loss of proteoglycan collagen content in matrix, loss of elasticity and softening of cartilage. In response of this loss, chondrocyte initially proliferated. As the disease progressed, there will be repetitive damage of cartilage, degeneration develop. Next, erosion and cracking initially appeared in the superficial layer of cartilage and progress over time to deeper layer. Central loss of the cartilage. Next, the normal distribution of stress is altered and develop pain, restrict movement. Next, synovium may also secrete excessive fluid and create inflammation. So you have to understand this pathophysiology clearly. What is happening here? You have already understand that osteoarthritis affect articular cartilage. Yes or no? Osteoarthritis is basically affecting the articular cartilage, and this articular cartilage is made up of two components. One is extramedullary matrix and another one is chondrocyte cell. This extramedullary matrix provide elasticity and flexibility, and chondrocyte cell maintain lubrication by generating one protein known as proteoglycan, जो आप लोगों ने ऑलरेडी कॉजेस में देख चुके हैं. मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि प्रोटियोग्लाइकेन की प्रोटीन का सिक्रेशन होते हैं chondrocyte सेल से. दिस प्रोटियोग्लाइकेन हेल्प फॉर lubrication of joint. Due to different causes, proteoglycan start losing similar things. Proteoglycan क्या करेंगे,
लूज हो जाएंगे एंड सिमिलर थिंग्स हैपन विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड कंड्रोसाइट सेल, which leads to weakening of cartilage, cracking of it. Slowly it will spread to deeper layer of bone like subchondral area also get involved. This means central loss of the cartilage and reduced joint space. And these two bones overlap with each other, both rubbing, grating with one another. Elasticity start diminishing. That leads to secondary inflammation. तो इसको अगर शॉर्टली हम डिस्क्राइब करते हैं तो आपको समझना है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज मेनली दो कंपोनेंट से बना होता है, एक्स्ट्रामेडुलरी मैट्रिक्स एंड कंड्रोसाइट सेल। एक्स्ट्रामेडुलरी मैट्रिक्स इलास्टिसिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रोटीन कंटेंट सीक्रेट करते हैं और जनरेट करते हैं जिसका नाम है प्रोटियोग्लाइकन। इस प्रोटियोग्लाइकन लुब्रिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। डिफरेंट कॉजेस की वजह से जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि एज फैक्टर हो गया, एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटी हो गए, स्ट्रेस हो गए, ओबेसिटी हो गए, डिफरेंट कॉजेस की वजह से जो प्रोटियोग्लाइकन क्या हो जाएगा, स्टार्ट लूजिंग देयर फंक्शन। साथ में एक्स्ट्रा सेलुलरी मैट्रिक्स भी फंक्शन लूज कर देंगे। इसकी वजह से हमारी जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में क्या हो जाएगा, वीकेनिंग हो जाएगा, क्योंकि कार्टिलेज में कोलाजन कंटेंट नहीं आएंगे, प्रोटीन नहीं मिल रहा है। दिस लीड्स टू ब्रेकिंग, क्रैकिंग ऑफ कार्टिलेज एंड धीरे धीरे सारे रिएक्शंस डीपर लेयर ऑफ कार्टिलेज में जाएंगे, जैसे कि हम इसको बोलते हैं सबकंड्रल एरिया। आपने इमेज में भी ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड इसकी वजह से जब सबकंड्रल एरिया इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे सेंट्रल लॉस ऑफ द कार्टिलेज। जब सेंट्रल लॉस हो जाते हैं, इसकी वजह से जॉइंट स्पेस, दोनों बोन के बीच में जो जॉइंट स्पेस होते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं एंड दोनों बोन एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से दोनों बोन रब हो जाएंगे, दोनों में रबिंग करेंगे, ग्रेटिंग विथ वन अनदर, बोथ रबिंग एंड ग्रेटिंग विथ वन अनदर एंड इलास्टिसिटी भी उसका कम हो जाएंगे and which leads to secondary inflammation। and secondary inflammation की वजह से क्या होगा, साइनोवियल में excessive fluid secrete होगा और excessive fluid accumulate हो जाएगा। now clinical manifestation। First, pain. Patient, in this case, patient may feel severe pain whenever he or she take rest after full day of work. Next, limitation of movement. Limitation of movement because of less flexibility. Stiffness. Here patient will feel stiffness, mainly morning stiffness. Duration होगा less than 30 minutes. Crepitus. Crepitus means cracking sound or grating sound in joints while moving। जब joint को move करेंगे तो cracking sound और grating sound सुनाई देगा। Next, mild tenderness, whenever you will touch the affected joint you will feel pain। Next, burning sensation in muscles, burning sensation in muscles due to inflammation, loss of flexibility because synovial membrane will get affected and there will be destruction of the articular cartilage which leads to loss of flexibility। now two main noticeable symptom of osteoarthritis is Haverden nodes and Bocher nodes। so people have to remember this is the two important clinical sign of osteoarthritis। now what is Haverden nodes and what is Bocher nodes? It will be clear by one image। see, in Haverden nodes what will happen, our distal interphalangeal joints में extra bone growth हो जाएंगे जिसको हम बोलेंगे Haverden nodes। extra bone growth in distal interphalangeal joint। आप इमेज को अच्छे से नोटिस कीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, Bocher nodes। Bocher nodes मीन्स जब proximal interphalangeal joints में बोन ग्रोथ होते हैं ड्यू टू आवर बॉडीज डिफेंस सिस्टम, तो इसको हम बोलेंगे Bocher nodes। Now mnemonics of osteoarthritis mnemonics of osteo की symptoms को remember करने के लिए there are certain mnemonics I prepare for you। let's see the mnemonics। first, osteo की O
आउटग्रोथ ऑफ बोन, एज यू नो ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में बोन की ग्रोथ होते हैं फेलेंजेस एरिया में, हमने ऑलरेडी देखा है. इसमें हेवर्डेड नोड्स एंड बोचर्ड नोड्स इज द टू इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन. नेक्स्ट एस, सनराइज स्टिफनेस लेस देन 30 minutes. Tenderness on touching the sides, patient will feel pain. Experiencing crepitus, cracking sound or rubbing sound or grating sound you will feel as a patient in joints while moving the area. Next, it will affect only the joint. Remember, osteoarthritis is not a systematic condition. It will affect only the particular joints. Now, diagnosis or diagnostic test. History collection, physical examination, x-ray, radiological examination. So in history collection, as a nurse we have to take elaborate history from the patient. Elaborate history means past medical history, past surgical history, past any accidental history we have to collect from the patient, family history, present medical history, present surgical history, dietary pattern, what is his occupation, family background कैसे हैं, each and every history we have to collect from the patient. Physical examination, in physical examination में head to toe examination along with मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में आपको ध्यान से परफॉर्म करना है, रिफ्लेक्सेस चेक करना है. इसमें आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी, पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करा के पेशेंट से देखना है कि प्रॉब्लम कौन से एरिया में है. एंड दिस फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्प्स टू रिवील्स द टेंडरनेस एंड एनलार्जमेंट ऑफ द जॉइंट्स. नेक्स्ट, एक्सरे. X-ray is characterized by a progressive loss of the joint cartilage which appear on X-ray as a narrowing of joint space. X-ray में on joint space narrow मिलेंगे and you will also see the bone spur or osteophytes. Next, other radiological test में भी आपको same osteophytes growth मिलेंगे. Next test is joint fluid analysis. Joint fluid analysis is very important test because this test is identifying different type of arthritic condition. अगर joint fluid analysis test में uric acid मिलते हैं तो it symbolize that patient is suffering from gout. अगर rheumatoid factor मिलते हैं synovial fluid में by joint fluid analysis तो this means patient is suffering from rheumatoid arthritis. So इसीलिए joint fluid analysis is very important to perform because all the arthritis condition is more or less similar. See, this is osteophytes. Osteophyte is the bone spur or abnormal bone growth. Bone spur are bony projection which develop on the edges of the bone, usually where two bones come together. Bones की जो corners में extra bone growth हो रहा है इसको हम बोलते हैं bone spurs और osteophytes. Now, medical management. Medical management or management is very important, though we can very important because we can only cure symptoms but not the whole condition. whole condition को हम cure नहीं कर पाते, only symptoms को ही cure कर पाएंगे, इसलिए management बहुत ज़्यादा important है. In most patients with osteoarthritis, the initial analgesic therapy is acetaminophen. Topical analgesics such as capsaicin and methyl salicylate are also recommended. Next, newer therapeutic approaches include glucosamine and chondroitin, which are thought to improve tissue function and retard breakdown of cartilage. Next, viscous supplementation, the intra-articular injection of hyaluronic acid, is thought to improve cartilage function and retard degradation. It may also have some anti-inflammatory effects. So, if we discuss the medical management of osteoarthritis, the initial management will be analgesic therapy. It may be acetaminophen or topical analgesic like methyl salicylate. Other new drug regime includes glucosamine and chondroitin, which directly improve the tissue function and it will stop the breakdown of the cartilage. This is the one drug, glucosamine and chondroitin, one group of drug. Next, viscous supplement. Here intra-articular injection will be
given to the patient, like mainly hyaluronic acid, and this hyaluronic acid is very important to improve the cartilage function, and it will also stop the degradation, and this hyaluronic acid have some anti-inflammatory properties. Now surgical management. First surgery will be osteotomy. So what is osteotomy? You can get an idea by the name itself. Osteo means bone, tomy means creating one incision or creating one surgical hole. And in osteotomy, surgeon uses to cut the particular area of affected bone for giving realignment as well as to reduce the pain. In osteotomy, surgeon will cut the particular portion of the bone for realignment of the particular area. Graft used to apply in cut and adjoin the cut with screw and plates. Next surgery is arthrodesis. Arthrodesis is also known as joint fusion surgery. Why it is important? At what time arthrodesis is to perform? Whenever patient feels severe pain, joint movement is not at all possible, whenever joint get damaged fully, during this time, to resolve all the symptoms, arthrodesis is one of the important procedures. Joint fusion or arthrodesis means combining two bones or fusion of two bones by making incision in the skin, and before combining, surgeon used to remove the damaged portion of the articular cartilage and merge the two bone, दोनों बोन को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं. एंड ग्राफ्ट विल बी अप्लाइड हेयर, जहाँ पे दोनों बोन को जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें ग्राफ्ट अप्लाई करते हैं. और आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है कि एक इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस they will put in the fusion area for fixing the bone. After arthrodesis surgery, there is certain complication, means patient will not be able to move their joint. उनको arthrodesis के बाद supportive management में चलना पड़ता है. Next, arthroplasty. Arthroplasty means repairing the joint. It is actually a reconstruction surgery. This surgery, surgeon implant the prosthetic device so that patient can move their limb with the help of prosthetic device. आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो डैमेज बोन है इसको हटाया गया है, रिमूव करके prosthetic devices अप्लाई कर दिए हैं बोन्स में so that they can move their extremities. One more surgery is there. This is arthroscopy. Arthroscopy means surgeon observe the joint space by the arthroscope and remove the bone fragment. जब आप लोगों ने देखे थे कि joint space में small bone fragment हो जाते हैं due to breakdown of the cartilage, इसी bone fragment को arthroscope device से remove किया जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं arthroscopy. So there are total 4 surgery used to perform. First is osteotomy. Osteotomy means nothing but make an incision in the affected bone area for giving realignment, and graft last में graft use किया जाते हैं. नेक्स्ट आर्थ्रोडेसिस. आर्थ्रोडेसिस को हम बोलते हैं जॉइंट फ्यूजन सर्जरी, जिसमें एक्सट्रैक्टेड बोन पोर्शन को रिमूव करके दोनों बोन को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं. इसके साथ में ग्राफ्ट एंड इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस अटैच किया जाते हैं. नेक्स्ट आर्थ्रोप्लास्टी. आर्थ्रोप्लास्टी मीन्स रिपेयरिंग सर्जरी और रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, जिसमें प्रोस्थेसिस यूज करते हैं डिफेक्टेड बोन्स और अफेक्टेड जॉइंट्स को रिमूव करके. आर्थ्रोस्कोपी. आर्थ्रोस्कोपी मीन्स बाय द हेल्प ऑफ आर्थ्रोस्कोप सर्जन ऑब्जर्व द जॉइंट स्पेस एंड रिमूव द bone fragments. Nursing management. First, assessment. Assess the health history including questions concerning the occurrence of osteoarthritis. Next, collect history of patients including past history of fracture, family history. Focuses on collection of information regarding dietary consumption of calcium, exercise pattern, onset of menopause, and use of corticosteroid as well as alcohol, caffeine, smoking.
Identify any symptoms the patient is experiencing, such as back pain, joint swelling, altered body images. Check vital sign. Perform physical examination to disclose a fracture, kyphosis of the thoracic spine or shortened spine. Next, identification of pupil at risk for osteoporosis and recognition of problem associated with osteoporosis from the basis of nursing assessment. So first of all, assess the health history, including the question concerning the occurrence of osteoarthritis, how osteoarthritis develop. This occurrence of osteoarthritis, we have to ask the patient regarding it. Next, collect history from patient, like family history, previous any fracture history, dietary pattern, then use of drugs like corticosteroid, any bad habits of the patient, alcohol, caffeine, smoking, consumption. These all are the histories we have to collect from the patient. Identify the symptoms, present symptoms of patient, like back pain, joint swelling, altered body images, crepitus, activity intolerance. These all are the symptoms we has to identify from patients. Vital signs, physical examination to detect any abnormality of spine, like kyphosis, scoliosis of the spinal condition, fracture of vertebra. To disclose this disease condition, we have to perform the physical examination, as well as identify the risks of osteoporosis and the problem associated with the osteoporosis. First nursing diagnosis is acute pain related to bone deformities, muscle spasm, physical mobility, as evidenced by facial grimaces, irritability, protective guarded behavior, restlessness, refusal or inability to participate in ongoing exercise or rehabilitation program, reports of a decreased ability to perform ADLs because of discomfort. First diagnosis will be acute pain related to bone deformity. First diagnosis will be based on pain management. तो इसमें पेशेंट का पेन होगा, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू नंदा डायग्नोसिस आई प्रिपेयर्ड the diagnosis for you. So इसके intervention हम देखते हैं. First of all, we have to identify the location of the pain, measure the severity, intensity of pain. Does the pain is radiating, or it is a stagnant pain, or this pain duration of the pain, and it is a severe pain, mild pain, moderate pain, by the pain rating scale. Next, maintain comfortable position by moving the client and give gently when turning and repositioning. Safe and comfortable hazard free environment we have to provide for the patient. Psychological support and administer analgesic as per doctor's order. Application of cold application to the affected area as per doctor advice. Nursing diagnosis: impaired physical mobility related to fatigue, muscle weakness, pain, restricted joint movement. As we know that physical mobility will be impaired because of cartilage destruction, because of stiffness, and which is basically related to restricted joint movement, muscle weakness, and as evidenced by patient will be not able to function properly, daily activity maintain नहीं कर पाएंगे. तो nursing intervention will be there for impaired physical mobility, such as assess the patient's functional ability for mobility and note changes, provide range of motion exercises, repositioning after 2 hours, apply pillows to maintain the joint alignment, assist patient with working, with all the activity, where daily activity. As a nurse, we have to assist the patient. Use mechanical lift for patient who cannot bear weight and help them out of the bed at least daily. Avoid restraint as possible. Instruct family regarding range of motion exercises. Nursing diagnosis: deficient knowledge related to lack of exposure to information regarding medication, dietary modification or safe activity program.
then the knowledge will be deficient in this case related to all the treatment protocol related to their disease conditions or safe activity program. Nursing intervention: assess the patient knowledge level or regarding disease, diet, medication, exercise. Assess the patient about the understanding of disease condition, provide support, advise the patient to join some health education program, and assist to plan an exercise program according to capability to avoid flexion of the spine and wear a corset if appropriate, and also educate the patient or patient attendants regarding the disease protocol or regarding the treatment protocol, like causes of disease, how we can prevent the disease, what are the treatment including here. टीच पेशेंट अबाउट न्यूट्रिशन, कैल्शियम इनटेक, डाइट के बारे में आपको समझना है, पेशेंट को समझाना है. नेक्स्ट, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाते हैं फॉर डेली लिविंग, जैसे कि लिफ्टिंग, बैंडिंग, हैवी थिंग्स लिफ्ट नहीं करना है, हैवी ऑब्जेक्ट्स कैरी नहीं करना है, सारी चीज़ आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है. नाउ प्रिवेंशन, weight reduction, prevention of injuries, perinatal screening for congenital hip disease, the use of heat, joint rest and avoidance of joint overuse, orthotic devices to support inflamed joint, postural exercise and aerobic exercise. First, reduce the weight. Obesity stress bearing joint के ऊपर affect करते हैं, इसीलिए weight reduction is the primary prevention, first prevention. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी. प्रीवियस इंजरी अगर हो जाते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का रिस्क है, तो इसलिए पहले से इंजरी से और फ्रैक्चर से प्रिवेंट करना है खुद को. स्क्रीनिंग फॉर एनी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज. नेक्स्ट, रेस्टिंग ऑफ द जॉइंट. डू नॉट overuse the joint or not use the joint excessively, unnecessarily, in a wrong manner or abnormally. Orthotic device like splint and brace can be used. Some kind of exercise, aerobic exercise, walking, yoga, postural exercises recommended for those patients. Some points you have to remember for then it will be very helpful to differentiate the different types of arthritis. First, osteoarthritis is a degenerative joint disease. Degenerative means एज के साथ साथ उसके जो सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स के फंक्शंस लॉसेस होना शुरू होते हैं. तो इसमें कौन से सिस्टम्स के होंगे? जॉइंट्स एंड बोन्स के, स्पेशली कार्टिलेज. इट अफेक्ट कार्टिलेज, नॉट साइनोवियम, आपको पता है ऑलरेडी. इट हैपेंस एंड गेट वर्स ओवर टाइम. धीरे धीरे कंडीशन वर्स होते जाएंगे. Most commonly occur in hands, hip, knee, spine, especially weight-bearing joints. Remember, weight-bearing joints में ज़्यादा से ज़्यादा osteoarthritis होते हैं. It is symmetrical नहीं है, systematic भी नहीं है. Only joints get involved here. Risk factor like old age, more than 40 years, repeated joint injuries, strenuous job like nursing, long time standing position also give pressure on the weight-bearing joints like knee joint and hip joint. Diagnosis: joint fluid analysis is the very important test to rule out the form of arthritis. X-ray. Treatment: there is no cure for osteoarthritis. You can only improve the symptoms by some exercise, medication, weight reduction, surgery. That's all about the osteoarthritis. Now we'll see the next condition. This is rheumatoid arthritis. This rheumatoid arthritis is the second type of arthritis. Introduction. Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disorder that can affect more than one joint. It is most commonly affect the joint of the hand, feet, wrist, elbow, knee and ankle. The joint effect is usually symmetrical. In some people, the condition also can damage a wide variety of body system, including the skin, eyes, lungs, heart, and blood vessels. Due to this reason, it is known as systematic disease.
First of all, before understanding the introduction of rheumatoid arthritis, you have to keep in mind the word rheumatoid is composed of rheumatism, which linked with musculoskeletal system, and arthritis is composed of two words. Arthron means joint, itis means inflammation. So rheumatoid arthritis is inflammation of joint, especially synovial membrane inflammation. One more thing is rheumatoid arthritis is autoimmune condition because our immune system mistakenly attacking the healthy joints or synovium. That's why it is known as autoimmune condition. Rheumatoid arthritis is a systematic disease. It is symmetrical. Symmetrical means both sides get involved in rheumatoid arthritis. Mainly wrist and finger joints are getting involved in the rheumatoid arthritis, but other joints like neck joint, elbow joint, knee and ankle joint also can involve in this condition. Though it is very difficult to diagnose this condition because all the symptoms are quite similar or very much similar with other arthritic condition, still as a healthcare provider we should diagnose this condition as soon as possible, because otherwise it will damage all the joints of human body. Rheumatoid arthritis may persist for long time, for lifetime in some of the cases, but for some person it may be for short duration, again remission, again the condition can develop. Rheumatoid arthritis affecting mainly 20 to 60 years of people, but osteoarthritis may you have seen that after 40 years the patient are in risk of getting this osteoarthritis, but rheumatoid arthritis में 20 से 60 ईयर तक पीपल को हो सकते इस कंडीशन. आप इमेज में देखो साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया है, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑलरेडी स्वेल्ड हो चुके हैं. एक्सेस जॉइंट फ्लूइड, जॉइंट कैप्सूल भी अफेक्टेड है. डेफिनेशन: इट इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड especially by pain, stiffness, inflammation, swelling and sometimes destruction of the joints. In introduction only you already understand that this is the autoimmune condition, and because our immune system mistakenly attacking the synovium, and which is characterized by pain, inflammation, swelling, sometimes destruction of the joints, and कोई cases में cartilage, articular cartilage and subchondral area भी affected हो जाते हैं. देख सकते हो आप और एक इमेज में साइनोवियल मेम फ्लूइड में कैसे इन्फ्लेमेशन हो चुका है. इन्फ्लेम्ड साइनोवियम you can see easily here. This is another image of rheumatoid arthritis. Left hand side healthy joint, right hand side damaged joint. Inflamed joint fluid, बोन स्टार्ट डैमेजिंग, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं, डैमेज कार्टिलेज सबकॉन्ड्रल एरिया में भी इफेक्ट होगा, धीरे धीरे सेंट्रल लॉस होना शुरू हो जाएगा. टाइप्स: देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ rheumatoid arthritis: सेरोपॉजिटिव rheumatoid arthritis, सेरोनेगेटिव rheumatoid arthritis, जुवेनाइल इडियोपैथिक arthritis. तो फर्स्ट सेरोपॉजिटिव rheumatoid arthritis. Seropositive rheumatoid arthritis means if rheumatoid factor found in a blood of a rheumatoid arthritis patient, it is known as seropositive rheumatoid arthritis. अगर आप rheumatoid arthritis की पेशेंट की ब्लड टेस्ट कर रहे हो एंड इसी ब्लड टेस्ट में अगर rheumatoid factor पॉजिटिव मिलते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सेरोपॉजिटिव rheumatoid arthritis. नाउ व्हाट इज rheumatoid factor? rheumatoid factor एक प्रोटीन है इम्यून सिस्टम का जो मिस्टेकनली अटैक करते हैं जॉइंट्स में. नाउ सेरोनेगेटिव rheumatoid arthritis सेम, अगर ब्लड में rheumatoid factor नहीं है then this condition is mainly known as seronegative rheumatoid arthritis. Last is juvenile idiopathic arthritis. तो juvenile से आपको पता चल रहा है वो चाइल्ड में होते हैं, बच्चे में हो जाते हैं. In child less than 16 years may suffer from juvenile idiopathic arthritis.
तो इसमें जो आर्थराइटिस के सिम्टम्स है सारे सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे, बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, चाइल्ड लेस देन 16 years. Causes of rheumatoid arthritis. First, if the immune system attacks synovium, as you know this is autoimmune condition, तो immune system synovium को mistakenly attack कर सकते हैं. Obesity, तो how obesity can cause rheumatoid arthritis? During obesity एक इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जनरेट होते हैं जिसका नाम होता है साइटोकाइंस, एंड दिस साइटोकाइन क्रिएट इन्फ्लेमेशन. इसके लिए ओबेसिटी इनडायरेक्टली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ लिंक है. प्रीवियस जॉइंट डैमेज, अगर कोई प्रीवियस जॉइंट डैमेज हुआ है लाइक फ्रैक्चर एंड ऑल, तो वो भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस फर्दर क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट, हार्मोन्स. हार्मोन्स में बेसिकली फीमेल में आफ्टर मेनोपॉज ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल रिडक्शन हो जाते हैं. जब ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल रिडक्शन हो जाते हैं दैट लीड्स टू डिक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, एंड ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी जब डिक्रीज हो जाते हैं इसकी वजह से और कार्टिलेज में भी अफेक्ट होते हैं, कार्टिलेज डैमेज होता है एंड बोन वीक होना शुरू हो जाते हैं. स्मोकिंग. स्मोकिंग कैसे कॉज करते हैं? स्मोकिंग साइटोकाइन रिलीज करते हैं. साइटोकाइन एक इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर होते हैं जो इन्फ्लेमेशन शुरू करते हैं. नेक्स्ट, जीन, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी. इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंडीशन ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन और HLA, especially HLA-DRB1, दिस इज द जीन जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के. इस जीन का मेन फंक्शन होता है डिस्टिंग्विश करना बॉडीज ओन प्रोटीन फ्रॉम प्रोटीन मेड बाय द फॉरेन इन्वेडर्स. जो बॉडीज के खुद प्रोटीन होते हैं एंड जो फॉरेन प्रोटीन है इसमें डिस्टिंग्विश करने का काम करते हैं HLA जीन. अगर इसी जीन में कोई ससेप्टेबिलिटी, कोई एबनॉर्मलिटी हो रहा है तो दैट में ऑल्सो लीड टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. मिनरल अगर नहीं होगा तो वो भी आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्रिएट कर सकते हैं. सीडेंटरी लाइफस्टाइल. पैथोफिजियोलॉजी. Due to etiological factor, immune system attack joints and other tissue. White blood cell of the immune system move into the joint. It release chemical named as cytokine, which attack the cell of synovial membrane. The chemical cause synovial cell to release other destructive substance and develop new blood vessel, as well as inflammation process of synovium get started. It form a thickened area made up of granulation tissue named as penis. Over time, penis grow. It invade and destroy the cartilage and bone of the joint. Excessive inflammation cause fluid filled up in the joint and make joint swollen. It form a thickened area made up of granulation tissue named as penis. Over time, penis grows and it invade and destroy the cartilage and bone of the joint. Excessive inflammation causes fluid filled up in the joint and make joint swollen. Eventually, joint space become narrow and ankylosis develop. It make joint fusion and symptoms appear. So पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से समझो. Due to etiological factor, immune system mistakenly attack the joint and tissue. Then immune response begin, as well as WBC start moving towards the synovial membrane of the joint and attacking it. So inflammatory reaction take place. At the same time, inflammatory mediator cytokines start release, and these generate other destructive material at the same thing. डिस्ट्रक्टिव मटेरियल का जनरेट करेंगे, शुरू हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव मटेरियल. उसके साथ साथ न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस. एंड आफ्टर दैट इन्फ्लेमेशन में स्प्रेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट बाय दिस न्यू ब्लड वेसल्स. Then granulation tissue start forming in the synovial membrane, especially of synovial cavity, जिसका नाम है पेनस. पेनस means proliferation of the synovial fluid, which is very destructive
things because it destroys the bone and cartilage slowly. Then excessive inflammation develop which build up fluid in the joint space. Eventually joint space become narrow, joint fusion or ankylosis develop. Symptoms start appearing. So दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी. इसमें आपको शॉर्टली समझा देती हूँ मैं आप और अच्छा से. इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से इम्यून सिस्टम अटैक होते हैं. इम्यून सिस्टम में इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शुरू हो जाते हैं, WBC साइनोवियल मेम्ब्रेन तक पहुँच जाते हैं एंड साइटोकाइन रिलीज होते हैं. जब साइटोकाइन रिलीज होते हैं, साइटोकाइन इसके साथ साथ डिस्ट्रक्टिव मटेरियल भी जनरेट करते हैं एंड उसके बाद न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं एंड डेवलप न्यू ब्लड वेसल्स एज वेल एज इन्फ्लेमेशन प्रोसेस ऑफ साइनोवियम गेट स्टार्टेड. तो न्यू ब्लड वेसल जब फॉर्मेशन होगा तब इन्फ्लेमेशन इसी न्यू ब्लड वेसल से डिफरेंट बॉडी सिस्टम में स्प्रेड होते रहेंगे एंड उसके बाद साइनोवियल स्पेस में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो प्रोलिफरेशन हो जाएगा एंड एक ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलप होगा जिसके हम बोलते हैं पेनस. इस पेनस ओवर टाइम ग्रो करना शुरू करेंगे एंड वो पेनस धीरे धीरे कार्टिलेज एंड कार्टिलेज की जो सबकंड्रल एरिया होता है जस्ट बिलो द कार्टिलेज उसको डैमेज करेंगे. उसके बाद एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन शुरू होगा, फ्लूइड बिल्डअप होगा जॉइंट में एंड जॉइंट में क्या होगा, सोलन हो जाएंगे एंड धीरे धीरे जॉइंट फ्यूशन हो जाएंगे एंड पेशेंट को जॉइंट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे. स्टेजेस. देयर आर टोटल 4 स्टेजेस ऑफ rheumatoid arthritis. First, healthy joint. In healthy joint you can see synovial capsule protect the joint, synovial fluid lubricate it. मतलब this joint is nicely covered by the capsule, membrane, joint cavity, cartilage. First is synovitis. Synovitis means inflammation of the synovium. तब इन्फ्लेमेशन कैसे होंगे आप इमेज में अच्छे से देख सकते हो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड एंड थिकन हो चुके हैं, बोन एंड कार्टिलेज जो है धीरे धीरे इरोशन होना शुरू हो जाएगा. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम बिकॉज WBC मूविंग टुवर्ड्स द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाते हैं. मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में समझाए थे, साइटोकाइन रिलीज होते हैं, डिस्ट्रक्टिव मटेरियल जनरेट होते हैं एंड इसकी वजह से साइनोवाइटिस हो जाते हैं. नेक्स्ट, पेनस. पेनस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू बाय प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड. तो आप देख सकते हो जॉइंट स्पेस में पेनस ग्रोथ हुआ है एंड दिस पेनस सीवियरली डिस्ट्रॉय द कार्टिलेज एंड 2 बोन्स स्टार्ट एक्सपोज. इधर कोई भी कार्टिलेज आपको नजर नहीं आ रहा होगा. इधर जैसे कि आपको देख पा रहे हो कि ब्लू पोर्शन इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, इधर फिर भी कार्टिलेज है बट कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे भी शुरू हो चुके थे. इन दिस केस देयर इज नो कार्टिलेज परसिस्ट. तो पेनस क्या करते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं. उसके बाद थर्ड स्टेज है fibrous ankylosis. Whenever the penis develop, next step will be fibrous ankylosis. Means develop the fibrous connective tissue in between 2 bones in replacement of the granulation tissue. Granulation tissue को replace करके fibrous tissue दोनों bone के बीच में डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट, बोनी एल्काइलोसिस. बोनी एल्काइलोसिस और एनकाइलोसिस इज जॉइंट फ्यूजन. दोनों बोन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. This is also same thing, stages. Now clinical manifestation. First is joint stiffness. Joint stiffness because of inflammation, formation of granulation tissue. इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, जॉइंट स्टिफनेस होते हैं. जॉइंट स्टिफनेस मेनली पेशेंट को आफ्टर 1 to 3 years सीवियरली फील होते हैं. नेक्स्ट, joint tenderness. Joint tenderness means whenever you will touch the affected joint you will feel the pain. जॉइंट पेन एंड जॉइंट स्वेलिंग होगा. इन्फ्लेमेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है तो इसीलिए जॉइंट में स्वेलिंग होंगे. जिस स्वेलिंग की वजह से आप देख सकते हो रियूमेटॉइड नोड्यूल्स क्रिएट होते हैं. इस इमेज में अच्छे से देखो, रियूमेटॉइड नोड्यूल्स जस्ट बिलो द सबक्यूटेनियस टिश्यू में सॉफ्ट लम्प मिलते हैं और सॉफ्ट लम्प डेवलप होते हैं जिसको हम बोलते हैं रियूमेटॉइड नोड्यूल्स. Joint redness. Joint redness because inflammation ब्लड वेसल्स को वाइडन कर देते हैं एंड ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाते हैं which leads to redness. Numbness and tingling sensation because due to inflammation nerve get compressed and patient feel tingling sensation like needle prick.
जॉइंट वर्म्थ होगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दिस केस जॉइंट एनकाइलोसिस और जॉइंट फ्यूजन ऑलरेडी डेवलप. Bilateral joint will be affected. Now swan neck deformity. What is swan neck deformity? Swan neck deformity एक late stage symptoms होते हैं rheumatoid arthritis में. Whenever tendon get affected, then changes may develop in the phalanges. जब tendon affect होते हैं तो phalanges में changes आते हैं. What changes will be there? आप देख सकते हो distal interphalangeal जो joints होते हैं उसका bend होगा और flexion हो जाएंगे and proximal interphalangeal joint का hyper extension होते हैं. इसको हम बोलेंगे swan neck deformity. Now extra articular features of RA. Fever due to inflammatory process, weight loss, fatigue, anemia. Now why anemia will develop? Because rheumatoid arthritis is a systematic disease, so it will obviously involve or obviously affect the kidney, and one important function of the kidney is to develop erythropoietin. अगर kidney affect हो रहा है तो less erythropoietin production will be there, which leads to लेस आरबीसी फॉर्मेशन. अगर आरबीसी प्रोडक्शन फॉर्मेशन कम हो जाएंगे तो एनीमिया कॉज करेंगे पेशेंट में. लिम्फ नोड एनलार्जमेंट एंड वन मोर थिंग इज रेनॉल्ड्स फेनोमेना. व्हाट इज रेनॉल्ड्स फेनोमेना? Raynaud's phenomena is whenever digital arteries constricted due to inflammation, there will be restricted blood flow to fingers and toes, which leads to discoloration. आप देखो इधर इमेज में constricted digital arteries block blood to fingertips causing discoloration. इन्फ्लेमेशन की वजह से जब डिजिटल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाते हैं एंड डिस्कलरेशन हो जाता है. Next is arthritis. Arthritis means inflammation of the arteries. This is also one symptoms of what? Rheumatoid arthritis. Neuropathy. नर्व कंप्रेस हो जाते हैं, इसके लिए पेशेंट को सेंसेशन फील नहीं होता है. Scleritis. Scleritis is the late stage symptoms of rheumatoid arthritis. You can see in the picture that blood vessels are literally dilated here. Pericarditis and splenomegaly. Now 7S for remembering the symptoms. Sunrise stiffness. Patient will feel stiffness, morning stiffness, but for more than 30 minutes. Soft feeling in joint due to inflammation. Swelling in the joint, इसमें rheumatoid nodule create होगा. Symmetrical, दोनों side, both side involve होंगे. Synovium affected and inflamed. In this case, synovium will be affected, ना, not cartilage. Firstly, synovium. Next, systematic. different system को involve करते हैं. Stages. There are total 4 stages of rheumatoid arthritis. Now sign of rheumatoid arthritis, very important sign. Botanier deformity of thumb, ulnar deviation of metacarpophalangeal joints and swan neck deformity. जो साइंस डेवलप हो रहे rheumatoid arthritis में, दिस इज बिकॉज ऑफ अगर टेंडन इफेक्ट होते हैं तो इतना सारा चेंजेस यू कैन सी इन द पेशेंट विद rheumatoid arthritis. फर्स्ट इज botanier deformity. Botanier deformity में जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होते हैं इसका हाइपर एक्सटेंशन होते हैं एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन होते हैं. इसको हम बोलते हैं बोटोनियर डिफॉर्मिटी. अल्नर डेविएशन हो जाते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स का. एंड स्वान नेक डिफॉर्मिटी मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे. जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है उसका बेंट हो रहा है या फ्लेक्शन हो रहा है एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन हो रहा है. Practice question 3. Rheumatoid arthritis is different from some other form of arthritis because it is more painful than other form. It occurs below the waist. It's symmetrical, affecting the right and left side of the body. It generally occurs above the waist. So the option C is the right answer because it is symmetrical. So दोनों साइड में इफेक्ट होता है, bilaterally इफेक्ट होते हैं. You will get in slide number 70. Diagnosis.
First, history collection, physical examination, blood test, ESR, rheumatoid factor test, anti-CCP, anti-nuclear antibody test, C-reactive protein test, arthrocentesis, X-ray. History collection. All over history collection we have to collect from the patient. जो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिस्कस किए थे सारे हिस्ट्री कलेक्शन इधर रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हमें कलेक्ट करना है. फिजिकल एग्जामिनेशन, मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन मेनली यू हैव टू परफॉर्म. ब्लड टेस्ट में WBC का अमाउंट देखा जाएंगे तो DSR, erythrocyte sedimentation rate. Erythrocyte sedimentation rate is a type of blood test that measure how quickly erythrocyte or red blood cells settle at the bottom of the test tube that contain a blood sample. Normally the red blood cells settle relatively slowly. A faster than normal rate may indicate inflammation in the body. In inflammation, destructive chemical make the RBC clump, dance, clot. For that, RBC used to settle down very firstly on test tube. ESR, erythrocyte sedimentation rate. This is very essential for inflammatory condition because जब inflammation होते हैं due to some destructive chemical, RBC will easily settle down in the test tube. That's why the timing will be ज़्यादा मिलेंगे आपको, टाइमिंग जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं. इसका रेट है 0 to 15 mm per HR in men, 0 to 22 mm HR to 0 to 30 mm HR in female. Rheumatoid factor test, normal value 0 to 20 ml. बट rheumatoid factor एक प्रोटीन होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मिस्टेकनली अटैक करते हैं. इन दिस केस आपको rheumatoid factor ज़्यादा मिलेंगे. एंटी-CCP एक एंटीसाइक्लिक साइटोन रिलेटेड पेप्टाइड है जो इम्यून सिस्टम में मिलते हैं एंड दिस प्रोटीन मिस्टेकनली अटैक करते हैं जॉइंट्स को. इसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा मिलेंगे. एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट. सो दिस एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी टेस्ट फॉर हेल्पिंग टू डायग्नोस ए सस्पेक्टेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. In normal individual, as you know, the immune system produce antibody to foreign proteins, but not the human protein. But in this case, the antibody that targeted the normal protein within the nucleus, and this is known as anti-nuclear antibody. These anti-nuclear antibodies presents in a large amount in this autoimmune condition. C-reactive protein. What is C-reactive protein? C-reactive protein is mainly forming in the liver, but in the inflammatory reaction आपको blood में C-reactive protein का level ज़्यादा मिलेंगे. Arthrocentesis. What is arthrocentesis? Arthrocentesis is a minor procedures in which small needle with syringe is inserted into joint space to drain the fluid for fluid analysis and reduce inflammation. Sometimes it is very needed for intra-articular injection. एक्सरे किया जाएंगे. एक्सरे में आपको बोन डिस्ट्रक्शन देखने मिलेंगे. Management for RA. Here I have made 5 section of management for RA. First is medication, second is alternative or home remedies, third dietary changes, fourth surgery, fifth nursing consideration. Medical management. Firstly, non-steroidal anti-inflammatory drug, example aspirin, ibuprofen, naproxen, sodium. Next, corticosteroid for anti-inflammatory properties, prednisolone, dexamethasone, methylprednisolone, betamethasone. New generation drug. First is disease modifying anti-rheumatoid drug, and these work by blocking body's immune system response, and this help to slow down rheumatoid arthritis progression, and slowly it will reduce pain, swelling, stiffness. Example cyclophosphamide, hydroxychloroquine, and methotrexate. DMARD. This is blocking the whole immune system, whole overactive immune system, and slowly reduce the rheumatoid arthritis symptoms like cyclophosphamide
methotrexate, hydroxychloroquine. And biologic is the updated version of DMARD or new generation of DMARD, and this provided target response to inflammation rather than blocking body's entire immune system response. Biologic will not block the entire system, it will give the target response to inflammation, and this is very effective treatment for those patients who are not responded to DMARD. Example is rituximab and tocilizumab. Home remedies. Certain home remedies and lifestyle adjustment may help to improve the quality of life while living with RA. First is exercise. In exercise, you have to advise the patient to perform low impact exercise like yoga, walking, and jogging. Low impact, low strength exercise to regain their flexibility. Next, get enough rest. Enough rest is very needed to reduce the inflammation and pain. Also, one thing you have to keep in mind, whenever the pain will be reduced, at that time only the patient can perform exercise. Beforehand, it will not possible for the patient to perform the exercise because they will feel lots of pain. Next, apply heat or cold. Ice pack can help to reduce inflammation and pain. Some alternative hot treatment can also include warm shower, hot compression. This treatment may reduce muscle weakness. Assistive device such as splint and brace can hold the joint. It will reduce the inflammation. Rheumatoid arthritis diet. Food high in omega-3 fatty acid include fatty fish, chia seed, flax seed, walnut. Easily market में आप लोग को मिल जाएंगे. तो this omega-3 fatty acid is very essential because omega-3 fatty acid लेने से medication लेने का जो time period है वो थोड़ा कम हो जाता है. Antioxidants such as vitamin A, C and E may also help to reduce inflammation. Inflammation से कम करते हैं like blueberry, cranberry, strawberry, dark chocolate, kidney beans. Lots of fiber it's eating of lots of fiber also help to reduce the inflammation. Surgical management. Arthroplasty. In osteoarthritis also you have seen that arthroplasty is nothing but surgical reconstruction, removing the dead joint portion and replace it with a prosthetic device. Arthrodesis means joint fusion. First of all, they will remove the dead portion of the articular cartilage or damage the dead portion of the bones and they will fuse two bone. इसके साथ में graft apply करेंगे and internal fixation कर देंगे. Arthroscopy means आप देखो image में by the help of arthroscope they will look the joint space and इसमें जो damage portion है उस damage portion को remove किया जाएंगे. Synovectomy is reconstruction of the synovium, जिसमें अगर synovial membrane में inflammation हुआ है तो वो inflammation को कम करने के लिए synovectomy किया जाता है. This instrument insert करते हैं joints में to see the damaged tissue, irrigate किया जाता है instrument से. Anterior synovectomy आप देख रहे हो इधर perform किया है. Repairing of the synovium. Nursing management of rheumatoid arthritis. First, nurse has to assess the patient perception of the disorder, situation, action taken to relieve symptoms, plan for treatment, identifying issues and concerns that can be addressed by nursing intervention through collaboration with other team members to achieving the expected patient outcome. The health history and physical assessment focus on current and past symptoms such as fatigue, weakness, pain, stiffness, fever or anorexia and the effect of this symptom of the patient's lifestyle and self-images. So first of all, nurse has to assess the patient's idea about disease condition, symptoms, treatment regime, expectation or prognosis. Identify different issues related to nursing care by collaboration care or by other team member care. Then health history, physical examination, and also check the dietary pattern of the patient. Patient को advise करना है क्या क्या exercise करना है और कैसे perform करना है exercise को. सारा
हिस्ट्री कलेक्शन आपको अच्छा से परफॉर्म करना है, इसको हम नर्सिंग असेसमेंट में रखेंगे। वाइटल साइंस देखना है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को एग्जामिन करना है। Nursing diagnosis: acute and chronic pain related to inflammation and increased disease activity, tissue damage, fatigue or lower tolerance level. Fatigue related to increased disease activity, pain, inadequate sleep and rest, decoordination, inadequate nutrition and emotional stress and depression. Disturbed sleep pattern related to pain, depression, medication. Impaired physical mobility related to decreased range of motion, muscle weakness, pain or movement, limited endurance, lack of or improper use of ambulatory devices. Self-care deficit related to contracture, fatigue or loss of motion. Disturbed body image related to physical and psychological changes, and dependency imposed by chronic illness. Ineffective coping related to actual or perceived lifestyle or role changes. Now nursing intervention, these are the diagnosis. आप लोगों ने ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी देखे थे, सेम थिंग इधर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी सेम डायग्नोसिस है मोर और लेस. Nursing intervention: assess the joint for pain stiffness, observe the mental status, provide comfortable position, heat and cold application, resting the joint, ask the patient to perform physical examination, exercise, provide medicine. First of all, you have to assess the joint for pain, stiffness, swelling. Observe the physical status as well as mental status of the patient. Comfortable position you have to give the patient. Heat and cold application. Resting the joint for as much as possible. Apply heat and cold to the patient. Ask the patient to perform physical exercise like range of motion exercise, aerobic exercise. Provide medicine as per doctor order. Prevention: weight reduction, prevention of injury, resting of joint, orthotic devices, postural exercise, certain therapies that can improve the muscle strength. Points you have to remember here: autoimmune disease due to the synovium get inflamed. Rheumatoid arthritis एक autoimmune disease होते हैं जिसमें synovium involve हो रहा है. It can happen any age, 20 to 60 years में हो सकते हैं. इसके जो केसेस है वो वेरी करते हैं, कभी कभी लाइफ टाइम के लिए रह जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं. अगेन दोबारा क्रिएट हो सकता है, कंडीशन डेवलप हो सकते हैं. RA can affect mostly finger and wrist, but neck, shoulder, elbow, ankle and knees and feet में भी RA होते हैं. And इसमें stiffness होगा पेशेंट को, stiffness, morning stiffness for more than 30 minutes. RA is remember guys, RA is symmetrical and it is systematic. सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है. क्या क्या सिस्टम को अफेक्ट करते हैं? ऑल बॉडी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी सिम्टम्स से पढ़ लिया है. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आता है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया है. तो आज हमने डिस्कस कर लिए थे कि दो कंडीशन के बारे में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में. कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं. थैंक यू.